वेलकम गाइस। आज हम देखेंगे द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी लॉ के बेसिक टॉपिक जो हमको कॉलेज में पढ़ाया गया है। सो दिस इज़ नॉट प्योरली सम ट्यूटोरियल टाइप ऑफ वीडियो, बट इट विल बी मोर ऑफ मी लर्निंग एज वेल एज आई विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द फाइनमैन टेक्निक। सो इसमें मुझे जो भी समझ आता है उसको मैं बोलते जाऊंगा, उसको मैं सिंप्लीफाइड वे में बताने जाऊंगा और फिर उसको यूज़ करके मैं खुद लर्न करूंगा और मे बी यू कैन ऑल्सो लर्न एज वेल विथ मी। सो द टॉपिक इज today's day is 26/11, exactly 4 days before my exams. So very good time to start, I guess, right? Yeah, not really. What does it say? Concept of property. The concept of property in legal terms is broadly categorized into two types: movable and immovable property. Here is a detailed distinction between the two. Movable property refers to assets that can be easily moved from one place to another without altering their shape or structure. Examples include cash, vehicles, jewelry, furniture, electronics. So basically प्रॉपर्टी के दो टाइप्स है। उसमें फर्स्ट टाइप है कि दैट इज मूवेबल, एंड सेकंड टाइप है immovable. Understood. Then इसमें भी कुछ टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी में देखते हैं तो इट कैन कंटेन ऑफ कैश और व्हीकल्स और ज्वेलरी, maybe furniture. These are the examples of the properties which can be moved. Electronics. Superb. And then there comes the legal frameworks. Sale of Goods Act 1930 defines and governs the sale and transfer of movable property. IPC section 22 provides a definition of movable property. Registration Act 1908 section 2 subsection 9 also includes definitions relating to movable property. So basically ये तीन जगहों में हम प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लर्न कर सकते हैं. द सेकेंड विल कम is the immovable, that will include land, क्या लिख रहा हूँ मैं, trees, building, mineral rights, Okay, so for this also there's a legal framework. So transfer of property में governs the transfer of immovable property, and then in the Registration Act provides definition and regulation for the registration of immovable property, and then in the General Clauses Act defines immovable property. So let's see the key differences between these two types of property. The first is mobility. Definitely mobility is because क्या लिख रहा हूँ मैं, just a second.
मोबिलिटी इज़ बिकॉज मोबाइल तो हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, इमोबाइल को हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा होता है और बिना उसको डिस्ट्रॉय किए बगैर हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं. सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन. ओके, mobile generally does not require registration except in specific cases like vehicles. Definitely. So मोबाइल में जैसे कैश हो गया है या फिर ज्वेलरी हो गया, इन सारी चीज़ों को हम हर बार तो या फिर रजिस्टर तो नहीं करेंगे एक्सेप्ट व्हीकल्स. सो देन रजिस्ट्रेशन इज अनदर पॉइंट. Okay, what's the third? Transfer is relatively simple and can be done through delivery. Okay, transfer is another point. मोबाइल में तो आसान है, मोबाइल में क्या दिक्कत है? ट्रांसफ़र रिक्वायर्स अ फॉर्मल प्रोसेस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. ओके, सो देयर इज़ अ एक्स्ट्रा थिंग जो उसको रिलेटिवली हार्डर बना देगा. ओके, टैक्सेशन सब्जेक्ट टू डिफरेंट टैक्स रेगुलेशन सच एज सेल्स टैक्स और जीएसटी. ओके, सो दोनों की टैक्सेशन आई गेस अलग अलग है. इमोबाइल में सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर लोकल टैक्सेस. सो बोथ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेशन लॉस included. So all these are the differences. Right. Okay, what's next? So there are two case laws given. RC Cooper versus Union of India defined property as the highest right a man can have to anything, including both mobile and immobile assets. Then is Narayana Reddy Sripriya article provides a comprehensive overview of the legal distinction and definition. Okay, condition restricting transfer. The transfer of property can be restricted by various conditions imposed by law or through agreements between parties. Here are some key conditions that can restrict the transfer of property. Okay, we will learn about restrictions. So there's a legal restriction. Okay, legal restriction क्या कह रहा है? Statutory provisions. Transfer of Property Act 1882. Certain sections impose restriction on the transfer of property. For example, Section 6A states that the chance of an heir apparent succeeding to an estate cannot be transferred. So B is Land Reforms Act. Various state-specific land reform laws restrict the transfer of agricultural land to non-agriculturists. Right. So basically ये दो types हैं जिसके वजह से legal restrictions आ सकते हैं. उसके बाद में contractual restrictions. एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, हर बार आर अलग अलग लिख रहा हूँ मैं. कंडीशन प्रेसिडेंट. A condition that must be fulfilled before the transfer can take effect. For example, a property may be transferred to a person only if they marry within a certain period. Okay. Condition subsequent. A condition that, if fulfilled, can terminate the transfer. For example, a property may revert to the original owner if the transferee fails to maintain it. Okay, सेकेंड वाला तो समझ गया. फर्स्ट वाला क्या है? फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन ओनली इफ दे मैरी विद इन अ सर्टन पीरियड. ओह, इफ दे मैरी विद इन अ सर्टन पीरियड. Restrictive covenants. These are conditions imposed in a deed that restrict the use of transfer of the property. For example, a covenant may restrict the use of land to residential purposes only.
Okay, this I could make something out of. Oops. Then comes the judicial restrictions. Maybe something from the court's direction. Yeah, let's read about it. Court orders. Correct. Court may impose restriction on the transfer of property through injunctions or other orders. For example, during the pendency of a lawsuit, a court may issue an order preventing the transfer of the disputed property. That is correct. So there are two more case laws. Lakshman Das versus Jagat Ram, and then there is N.R. Raghavacharya versus State of Tamil Nadu. Yeah, this is something important. इसको हम रेड में आ जाते हैं. Definition. Transfer of property is defined under Section 5 of the Transfer of Property Act 1882. Transfer of property means an act by which a living person conveys Section 5 of Transfer of Property Act. सही लिख रहा हूँ क्या? कॉमा बाद में आएगा. ओके, यहाँ पर डिफाइन किसके बारे में किया है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. Key elements of the definition. Living person. The term living person includes individual as well as legal entities such as companies, associations, or bodies of individuals, whether incorporated or not. Conveyance. The act of transferring property can be done in the present or in the future. Types of property. The property can be movable or immovable. So these are the three elements of this definition. Then modes of transfer. Transfer of property outlines several modes of transferring property, including sale, gift, lease, mortgage, and exchange. So what happens in sale? Transfer of ownership in exchange for a price paid or promised. That is one mode. This will take the second, like modes of transfer. पहला है सेल फॉर अ प्राइस. देन कम्स गिफ्ट. यहाँ पर तो बिना सेल का. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन. दैट इज़ गिफ्ट. सो विदाउट कंसिडरेशन आगे तो गिफ्ट हुई है. देन कम्स लीज. A lease, transfer of the right to enjoy the property for a certain time in consideration of a price paid or promised. So lease है. Then comes mortgage. Transfer of an interest in specific immovable property for securing the payment of money advanced or to be advanced. Okay, mortgage. Fifth is exchange. Exchange कैसा होता है?
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन प्रॉपर्टी फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर. ओके, एक ने दूसरा दिया. सो देयर इज अ केस लॉ फॉर दिस. कल्याण सिंह वर्सेस श्रीमती छोटी. दिस केस elaborated on the essentials of a valid transfer under the Transfer of Property Act, emphasizing the need for a clear intention to transfer property. Okay, so we'll start the second video, transferable and non-transferable property.